Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to class 12 of learning to chant Narayaniyam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti guro mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janakashankaro devaha tam vande kunjarananam पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We'll start the revision of the fourth dashakam today. Start with Raghuvan. अथ चतुर्थं दशकं कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया शुतव तुष्टिमाप्नुयाम्. ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् त्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः. अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः. विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः. ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम्. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्. Ram Ram. Spurti. Ramya from Shloka 9. Ramya. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्. Ram Ram. Yes. Shloka. Yeah, Shloka 9. Ram Ram. तत्समाधि विजयेतु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः
उन्नयत्यजसुषुं नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Good. Dashakam 5, Spruti, the first 5 shlokas. अथ पंचमं दशकम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यतः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवह विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनातिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च त्विपराद्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः
चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्. Ram, good. So in the fifth shloka, when you said Udbodha, you interchange the Mahaprana and Alpaprana. You said Udbodha. That happens while reciting. It's okay. Just concentrate there. So it is a note for all the students. And in shloka 3, last time we had a confusion whether it was Vigatam Viksham or Vigata Viksham. We will stick to Vigata Viksham, which is the patha that is there in SN Shastri also, and it is a correct patha. So we'll stick to Dviparartha Kala Vigata Viksham, which is correct in the script as is shown is correct. Next, I have a few announcements to make, then we will give the class. So the scripts, many people are asking, I hadn't updated last week. So the 5th and 6th Dashaka have been updated and uploaded. So till 6th Dashaka end has been uploaded on the course website. And as with a lot of people are asking, the videos with only the Dashaka recitation have been uploaded on YouTube. So the parts where I have recited during the class, that has been edited by volunteers, and we have uploaded that on YouTube as separate videos. So there are 5-6 minutes videos and a separate playlist. If you go to the channel on YouTube, we will find it. Even on the course page, the link is given separately on the top itself. Each Dashakam separately, it has been given. So you can use that to revise multiple times. You can play only that and revise once you have got the pronunciation right, to memorize it or to keep listening again and again. You can use those videos. And then as we were talking about the test, the memorization test for Dashakams 1 to 5, there is a Google form that I have created. The link will be shared on on the chat itself right away, and you can use that. Also later we will send you a mail anyway. So when you have finished memorizing, then you can register for the test. The date will be announced shortly, probably in the next class I will announce the date. So this Google form is just so that you know that the test will be happening soon, probably in 3 or 4 weeks. So Dashakams, anyway, the 5th Dashakam will get over today. So you will have ample time to practice it, and then we will have the test. And at the end of the class today, I will conduct a mock test with one of the panelists so that you know how the memorization test will work. So the Parayanam test is not now. That is, the reading test is not now. It will be only after 25 Dashakams. Memorization test, that is, you have to completely by heart it and recite it. That will be after 5 Dashakams in a couple of weeks probably. So we shall that mock test I will do it today so that you have an idea of how the test will be conducted. So now we will go on with the today's shloka. Spurti, recite after me. Shloka number 6 of Dashakam 5. Sohancha Trigunakramat Trividhatam Asadya Vaikarikaha Bhuyastayjasa Tamasaviti Bhavannadyena Sattvatmana Devan Indriyamaninaha Akrita Disha Vatarka Pashyashvinaha
वह्नीन्द्राच्युत 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 मित्रकान् 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 विधुविधि विधुविधि twice विधुविधि विधुविधि शारीरकान् श्रीरुद्रशारीरकान् श्रीरुद्रशारीरकान् सोऽहञ्च त्रिगुणक्रमात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिकः आसाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनः देवानिन्द्रियमानिनः अकृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः अकृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् श्रीरुद्रशारीरकान् सोऽहञ्च त्रिगुणक्रमात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिकः त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः सोऽहञ्च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशा वातार्कपाश्यश्विनः दिशा वातार्कपाश्यश्विनः देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशा वातार्कपाश्यश्विनः
देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् सोऽहं त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना हे देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा पाश्यश्विनः देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् Good, well done. Just one more point I wanted to clarify in the while filling the Google form. If you have, for example, many of you might be listening from the same ID. So I have asked for an email ID. You can give the same email ID for 2-3 people who might be registering from the same house, if at all that happens. But give the name in such a way that so that the first 5 dashkam, next time you're giving the test, the name should be same. So name is the ID with which I will be able to identify you, how many times you have given the test. So fill in the form in the exact manner so that it is consistent when you fill it up the next time also. We'll go to shloka number 7. Ramya. Ramya, repeat after me. भूमन्मानस 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 बुद्ध्यहङ्कृति 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 मिलच्चित्ताख्य 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 वृत्यन्वितं 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 तच्चान्तःकरणं 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 विभो तव बलात् विभो तव बलात् विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् सत्त्वांश एवासृजत् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतः 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 दशेन्द्रियगणः 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 तत्तामसांशात् पुनः तत्तामसांशात् पुनः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसः तन्मात्रन्नभसः तन्मात्रन्नभसः मरुत्पुरपते 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 शब्दो जनित्वद्बलात्
शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दो जनित्वद्बलात्. So when the shloka ends with takara like this, we usually say srijat. Since even though it's just a haranta, we have to stop it as eva srijat. But if you stop it like that, the raga, and it is not very nice to hear. So traditionally, we just slightly pull it. It is not srijata or srijata. It is not akara or akara. It is just like eva srijat, just so that the tune ends. So some of you might have a doubt, like there is a halanta there, should we end it in the half letter? It is, if at all there is a dirgha before that, we can end it. Tvadbalat, we can end it like that. But since here there is no dirgha before the takara, so we are not able to pull it and end the raga. That's why there is a slight pull kind of thing on the halanta vowel, the consonant there. So that is how we recite, the traditional way. That's how our elders have taught it. That is the way. It is not wrong. It is not akara or akara that we are putting in there. It is just a slight in rendition for the raga. Bhuman manasa. Bhuman manasa. Bhuman manasa. Buddhyahankriti. 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 Milachittakya. 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 Vrityanvitam. 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 Tacchantakaranam. 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 Vibho tava balat. Vibho tava balat. Vibho tava balat. Sattvamsha eva srijat. Sattvamsha eva srijat. Sattvamsha eva srijat. Jatastaijasatah. जातस्तैजसतः जातस्तैजसतः Dashendriyaganah. दशेन्द्रियगणः दशेन्द्रियगणः Tattamasamshat punah. तत्तामसांशात् पुनः तत्तामसांशात् पुनः Tanmatrannabhasah. तन्मात्रन्नभसः तन्मात्रन्नभसः Marutpurapate. मरुत्पुरपते मरुत्पुरपते Shabdo janitvad शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दो जनित्वद्बलात् Bhumanmanasabudhyahankriti. भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृति भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृति Milachittakhyavrityanvitam. मिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं मिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं Manasabudhyahankriti milachittakya. मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य Bhumanmanasabudhyahankriti milachittakhyavrityanvitam. भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् Tell again. भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम्
चित्ताख्य वृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् सत्त्वांश एवासृजत् सत्त्वांश एवासृजत् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तत्तामसांशात् पुनः तत्तामसांशात् पुनः जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दो जनित्वद्बलात् तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् Good. Next. Shloka number 8. Spurti. Sorry, Raghun. शब्दाद्व्योमततः शब्दाद्व्योमततः ससर्जिथ विभो ससर्जिथ विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतः महोत्थचरसम् तोयञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात्
पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितम् 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 भूतग्राममिमम् 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 त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् 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 शब्दाद्व्योम 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 ततः ससर्जित विभो ससर्जित विभो ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् स्पर्शन्ततो मारुतम् स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतः 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 महोऽथ च रसम् महोऽथ च रसम् महोऽथ च रसम् तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव एवं माधव एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् 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 आद्याद्यधर्मान्वितम् 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 भूतग्राममिमम् 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 त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् 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 शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् स्पर्शन्ततो मारुतम् स्पर्शन्ततो मारुतम् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसम् तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात्
एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितम् 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 पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् 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 एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् भूतग्राममिमन्तमेव भगवन् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् 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 भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् शब्दाद्व्योमततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसन्तो यञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् श्लोक 9 स्फूर्ति रिपीट आफ्टर मी एते भूतगणाः एते भूतगणाः तथेन्द्रियगणाः तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् देवाश्च जाताः पृथक् that jatah prithak then kind of the f sound. Okay, it is not hakara, it is more of jatah prithak देवाश्च जाताः पृथक् नोशेकुः नोशेकुः भुवनाण्ड निर्मिति विधौ भुवनाण्ड निर्मिति विधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविध सूक्तिभिर्नुत गुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः
हैरण्यमण्डं यथाः हैरण्यमण्डं यथाः एते भूतगणाः एते भूतगणाः एते भूतगणाः तथेन्द्रियगणाः 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 देवाश्च जाताः पृथक् देवाश्च जाताः पृथक् देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड नोषे कुर्भुवनाण्ड नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ 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 देवैरमीभिस्तदा 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 त्वन्नानाविधसूक्तिभिः 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 नुतगुणस्तत्त्वानि 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 अमून्याविशन् 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 चेष्टाशक्तिमुदीर्य 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 तानि घटयन् तानि घटयन् तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः हैरण्यमण्डं यथाः हैरण्यमण्डं यथाः एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् देवाश्च जाताः पृथक् देवाश्च जाताः पृथक् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा 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 नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणः 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 तत्त्वान्यमून्याविशन् 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 त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन्
त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः हैरण्यमण्डं यथाः हैरण्यमण्डं यथाः चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथाः चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथाः एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथाः. Good. So in this the Roman IAST transliteration below, the jataha, there should be a visarga after jataha. The visarga h is missing in the English below. The Sanskrit Devanagari is correct. Only the h is missing in the English transliteration. I will correct it and post. Shloka number 10. Ramya, repeat after me. Andan tat khalo. अण्डं तत् खलु अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले पूर्वसृष्टसलिले अतिष्ठत् सहस्रं समाः अतिष्ठत् सहस्रं समाः अतिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताः निर्भिन्दन्न कृताः निर्भिन्दन्न कृताः चतुर्दश जगद्रूपम् चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् विराडाह्वयम् साहस्रैः साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मकः निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप मरुत्पुराधिप समान्त्रायस्व समाम्त्रायस्व सर्वामयात् सर्वामयात् अण्डं तत् खलु अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्ट सलिले तिष्ठत् सलिले तिष्ठत्
सहस्रं समाः सहस्रं समाः सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताः निर्भिन्दन्न कृताः निर्भिन्दन्न कृताः चतुर्दश जगद्रूपम् चतुर्दश जगद्रूपम् चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् 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 साहस्रैः 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 करपादमूर्धनिवहैः 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 निःशेषजीवात्मकः 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 निर्भातोऽसि 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 मरुत्पुराधिपसमाम् 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 त्रायस्व सर्वामयात् त्रायस्व सर्वामयात् त्रायस्व सर्वामयात् अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले अतिष्ठत् सहस्रं समाः अतिष्ठत् सहस्रं समाः अतिष्ठत् सहस्रं समाः अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् 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 निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपम् विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मकः 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 साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमाम् निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमाम् निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमाम्
त्रायस्व सर्वामयात् त्रायस्व सर्वामयात् त्रायस्व सर्वामयात् निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान्त्रायस्व सर्वामयात् निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् अण्डन्तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्. In the last line, Mam Trayasva will become Man Trayasva. I forgot to put the blue underline. I will put the underline and then put it. Anyway, if you can stop and say Samam Trayasva, that is always allowed. Just clarifying that I forgot to put the blue underline. It's not any exception. Iti Srimannarayaniye. इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये Virat Purushotpatti Varnanan Nama. विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम Panchamam Dashakam Samaptam. पंचमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Ram Ram. So we had a 2-day Narayaniyam Parayanam yesterday and today at home. It was live streamed on the Vyoma YouTube channel. All of you would have received the mail. I just wanted to make an announcement that one thing, it is recorded and it is available on the YouTube channel. So you can refer to it if you want to see how the Parayanam happened. And a lot of people have attended also, more than 150 people attended. So by the grace of Guruvayurappan, it happened. And yesterday and today it was decided instantaneously and it happened. So we sent out a mail also to all the attendees of this course. And hope all of you received the mail and many of you had logged in. So Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste for that. And now we will have the mock test with Ramya. I will be testing her on Dashakams 1 to 3. And you will see how the test happens. So for the next 5 minutes, we'll just have the test and you can see that. After the test, I will recite all the shlokas of the 5th Dashakam together. Today, yeah, I will recite all the shlokas of the 5th Dashakam together after the mock test. So we'll start. Ramya, ready? Yeah. Ramya, unmute yourself. Sattvam yattat. श्री गुरुभ्यो नमः. सत्वं यत्तत् पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतैन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यगच्छादितपरसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते धाराधरललितकला यावलीलोभनीयं पीयू. Repeat. Tatte प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावली केलिकारं
लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीर्निशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर तेजस्संहारि वीर्यम् विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् इत्थन्निःशेषलभ्यः इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटिद्रुममभिलषति व्यर्थमर्थि द्रुमम् राम 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 we can hear you. शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं दधति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताग्रं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् कारुण्याकुल नेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरण रसिको नाम निवहा चेत् अखिल परिताप प्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदय मिलन् महान् घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमरसचित्ते च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् ahanta. Good recitation. So this is how. So as the
participant goes on telling better and better, we will ask more tougher. So if first we will ask the starting of the shloka, then if they tell very well, then we will ask from the second or third line. They tell even that if they pass everything, then we will ask from middle of the pada. So that's how only then we will be able to mark them. So since this is not a competition, so everybody can pass with 90 plus marks and everybody can get the distinction certificate. So this is how the test will be. So as you said, that the panelist in one place in the second dashaka, she could not continue. So there. Oh, I got my network connection. Now I got my network connection. Ram. Sorry, there was a problem with the network. I hope all of you can hear me now. I'll just recite the whole of the fifth dashakam once. Atha panchamam dashakam व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिद् अभवत् प्राक्-प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम्. I'm not sure if it was heard. I'll restart recitation of the fifth. अव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्-प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम्. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना. कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः.
तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशावातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ चरसन्तो यञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृथाश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भारुत्पुराधिपायस्व सर्वामया नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Ram Ram Ram. So I hope all of you were able to hear. Sorry for the disturbances.
So anyone has any questions can ask now. I am going to lower all the hands. If you want to ask any questions, please raise your hands. Ram Ram. If any of you have questions, you can ask. Raise your hands and ask. Yeah. Gangeet 1976. You're self-muted. Gangeet 1976. Ram Ram. Ram Ram. Gangeet. You're self-muted. I'll get back to you. Geetu 14384. Ram Ram. Ram Ram. Gangeet, I'm not able to hear you. Ram Ram. Yes, yes. Ram Ram. நேத்தி ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் நாங்க கேட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த நீங்க லாஸ்ட்ல சொன்ன ஸ்லோகம் எல்லாம் கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எங்களுக்கு அத சொல்லி கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு கடைசி ஸ்லோகம். சொல்லி கொடுக்கிறேன். ஆக்சுவலா நீங்க எங்க இருக்கீங்க? இது எங்க நடந்தது? பெங்களூர்ல? இது பெங்களூர்ல ஆத்துல தான் நடந்தது. சரி. எந்த இடம்? ராம் ராம். பெங்களூர்ல பசவேஸ்வர் நகர் இடம். பசவேஸ்வர் நகர். ஓகே சார். தேங்க் யூ ராம் ராம். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. Itu Revati Nitesh. Revati Nitesh. Ram Ram. Revati Nitesh. Ram Ram. Sorry, நான் வந்து by mistake தான் ஏத்துனேன். பட் நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஓகே. அப்பர்ணா இருக்கல. அப்பர்ணா is your cousin. அவங்க தான் சொன்னாங்க. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar. Lalita Pallavur. Lalita Pallavur. Namaskaram. Ram Ram. Ram Ram. Lalita. Ram Ram. நான் தான் லலிதா பல்லாவூர். டெஸ்டும் இதே மாதிரி கிளாஸ் டைம்ல தான் நடத்துவேளா இல்லனாக்கா வேற மாதிரி தான்? இல்ல அது வேற டைம் நடக்கும். அது ஸ்லாட் தனியா சொல்றோம். we will tell you the slot separately because டைம் நடத்த முடியாது. ஓகே. ஜெயலட்சுமி சேகர். ஹலோ, நமஸ்காரம். ராம் ராம். ராம் ராம். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். நாங்க வந்து இத டெக்ஸ்ட பார்த்து சொல்ல படிக்கலாம் இல்லையா? எந்த லைன் நடுவுல இருந்து கேட்டலனாக்கா டெக்ஸ்ட பார்த்து படிக்கலாம் இல்லையா அந்த டெஸ்ட் போது? இல்ல, இந்த டெஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட பார்த்து படிக்கிறதுக்கு இல்ல, அதுக்கு தனியா டெஸ்ட் வைப்போம். இது வந்து ஓன்லி மெமரைசேஷன், பை ஹார்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கு மட்டும் தான் இந்த டெஸ்ட். ஓன்லி ஃபார் பை ஹார்ட். ஓகே ஓகே. 25 தசகம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்க பார்த்து நம்ம படிக்கலாம். சொல்றதுக்கு எவ்வளவு தசகமா இருந்தா என்ன, பார்த்து படிக்க வேண்டியது தானே, அது படிக்கிறதுக்கு வரணும். ஓகே தசகம். ஓகே சரி. குமார் வெங்கடநாராயணன். ராம் ராம். ராம் ராம் ராம். இதுல வந்து can we take Srimad Narayaniam of Free Traders? I am not able to hear you clearly. Hello Ram Ram. Ram Ram. Can we take நாங்க வந்து இது நாராயணியம் புக் Free Traders ல இருந்து எடுத்துக்கலாமா?
Yes, yes. You can take the Narayanian book from any traders, but there will be some Patha Beda. Patha Beda இருக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கலாம். அதனால அந்த கரெக்ஷன் வேணா இதை பண்ணிக்கோங்க. சிலது மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியாது, வேற பாட்டமா இருக்கும். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு. Okay. Thank you. Ram Ram Ram. Dhanyawada. Ram Ram. Kalyana Krishnan. Ram Ram. Hello, good morning from my part of the world. Hello, good morning. Yes, yes. I was just reading this over the last weekend on my own, this Dashakam 5, and I must have done each stanza about 10 to 15 times. It's still very difficult to get one stanza without any mistakes. So, and also the other comment is this Dashakam is pretty close to being parallel with the Bible in terms of Genesis. Is that correct? The creation of the world. Talks about the creation. Yes, there will be a lot of similarities. Okay, very good. Thank you very much. I just enjoy this and love this lesson, and always wait early in the morning. The second skandha, the second canto of the Bhagavata Purana, this will be in more detail. So this is a concise form of that. There are many chapters together. This creation takes place. Very good. Thank you very much, and keep up the great work. Thank you. Thank you. Namaste. Ram Ram. Prabha Ramesh. Ram Ram. Prabha Ramesh. Prabha Ramesh, you are unmuted on both sides. Okay, I'll get back to you. Aish Ritu. ராம் ராம், என் பேர் வந்து ஐஸ்வர்யா. அது ஏன் அங்க அந்த மாதிரி வருதுன்னு தெரியல. என்ன கேட்கணுமா இருந்ததுனாக்கா, இப்போ இந்த டெஸ்ட் நீங்க வச்சிருக்கிறது வந்து இஸ் தேர் a time frame for it? எனக்கு நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் அட்டெண்ட் பண்றேன். I didn't know that this started. இந்த வெப்சைட்டை பத்தியே எனக்கு 2 நாள் முன்னாடி தான் தெரியும். When I was googling on something else, I hit upon this. ஒன்னுல இருந்து 5வது தசகம். இப்ப இன்னும் 2 வாரம், another 2-3 weeks we might have the test. நீங்க அடுத்தது 6ல இருந்து 10, 11ல இருந்து 15 எல்லாம் சொல்லலாம். 2 வாரத்துல முடிஞ்சதுன்னா 1ல இருந்து 5 பண்ணுங்க. இல்லன்னா அப்புறம் எப்படி 100 தசகம் இருக்கு, இன்னும் 95 தசகம் இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே, சோ இப்போ 1ல இருந்து 5 நான் பண்ணனும் அப்படினாக்கா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 or 3 வீக்ஸ்ல I should cover the syllabus. Yes, hopefully அத பார்க்கணும். சரி, ஓகே. நான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன், நேத்திக்கு கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் தசகம். of course it's very very difficult. எனக்கு sanskrit knowledge கிடையாது. சோ அதனால I'll try my best. Yeah, I just wanted to know எவ்வளவு டைம் இருக்கு. Perfect. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Chitra Tyagarajan. Namaste Mahodaya. I have a doubt about this Samyukta Akshara. In the 7th sloka, 5th dasakathula, Bhuman Manasa Sambuddhya irukku இல்லையா, அதுல வந்து Manasa Buddhya, sorry Bhuman Manasa Buddhya இல்லையா, மகாபிராணாவோட தான் யா சேர்க்கிறோம் இல்லையா? கரெக்ட் இல்லையா? பட் இது வந்து how do we kind of get to know about it? This is okay. நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி வந்திருக்கனால I get to know about it. பட் சில இடத்துல தெரியுதுன்னா எப்படி which அக்ஷரம் should be pronounced first and then in order. See, this is only 3 அக்ஷரா here. Supposing more than 3 னு வெச்சுக்கோங்களேன், அப்ப எப்படி நம்ம இது பண்றது? இது more than 3 வருமாங்கிறது I don't know whether more than 3 will come. more than 3 ரொம்ப கஷ்டம் வருது. அப்படியா? இதுல நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து சப்தாத் வியோமா வந்து பாருங்க இல்லையா? அதான் அங்க வந்து சப்தாத் வியோமா அங்க தான் வருது. தா வா யா. ஆமா, பட் அதுல வந்து 3 my question is this, இந்த இதுல இந்த 3 அக்ஷரம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து தா should be pronounced first and then va and ya should be together இல்லையா? அப்போ சப்தாத் வியோமா இவ்யா, right? First, in whatever order they are written, in the same order they have to be pronounced. For example, in this shloka Manasa, இதுல பாருங்க
So when there is one below that, the one on top is pronounced first, one below is pronounced later. Later, but யா வந்து தா கூட சேர்த்திருக்காளே சப்தா வியோமால பாருங்க நீங்க சப்தா வியோமால தா கூட யா சேர்த்திருக்காங்க. So it's a confusing thing. அது கரெக்ட், சொல்றது கரெக்ட். இது அந்த ஃபாண்ட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அது எழுதுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல இருக்கிறத படிக்கணும், then the lower one, then the right okay one. அவ்வளவு. Yeah, இந்த புத்தி இதுல வந்து அது bottom right. ஈவன் இந்த புத்தியில கூட யா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரோட தான் சேர்த்து போட்டுருக்கு. That is always the so case. sometimes மானச அது வந்து இந்த ஃபாண்ட்ல இது பண்ணிக்கிறது, the way the font is computerல however the font is typed out. யாக்குவே எடுத்து வந்தா இது வந்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ்ல தான் வரணும் இல்லையா? I mean as you read. ஆமா, practice. Order it is written, top, bottom, then right. That is how it is pronounced. There is no difference. It is not English mari illa where GH night can be cough or anything. Appadi illa. So top whatever to order bottom, it is, and then the right one. Left to right. Top to bottom. Left illa right. Right la. I mean okay. Which one? The next one. Okay. Okay. Thank you so much. I had a doubt about this. Thank you, sir. Thank you. Panchanadam Swaminathan. Yeah, first of all, I have registered for the competition, even though I have not memorized it. But I saw your mock test. So how do I know that you are going to ask me when I am saying you give me a starting line? I start reciting it. Should I stop only that stanza or keep on going and then you interrupt me? No, you keep on going. So as just now the panelist Ramya was doing, so unless I interrupt you and ask you the next one, you keep on going to the next verse. And then if you interrupt me, give a line, it could be that dashakam or somewhere else. It doesn't have to be continuous, right? No, mostly I will not mix up too much of the dashakam. I will keep it simple. I will keep it in an orderly fashion in the same dashakam. Unless the participant is very good and then they are telling everything very well, then probably I will mix up and ask to see how well they say and how well they have memorized. So the challenge is, if a person keeps on going, you make it more and more difficult until they give up. Unless they probably make one mistake at least. Okay, that's good. I like that. I like the challenge. Now coming back to Samyukta Aksharas, this has been going on in my mind because I read so many books written by Westerners, not the Indians. So in one book, this was written in 200 years ago, they said all the letters that are individually written. When you write a letter and a sentence in Sanskrit, there is no such thing as punctuation mark is different. So each letter is written separately. Even in Samyukta Akshara, for example, Budhya, they write Da, Halanta, and then it, and then that way the confusion for people to say which order to say is lost. And is there some kind of a Paninian rule how they should be written, or it has come down to tradition? So this is more of tradition. I don't think there's a Paninian rule as to how to write the letters. I will get back. I'm not very knowledgeable as to whether there was a tradition of writing each letter with the halanta. I will ask somebody who is more knowledgeable on this writing tradition and ask. Because if they were to write in manuscripts, so they want the space is more important for them. So I'm not sure if they would write each Samyukta Akshara, that is the halanta Akshara, separately. I think they would more go with something like this. Anyway, I don't have complete knowledge to answer that question. I will get back to you in the next class probably with more clarification. Because I specifically read, I was surprised. He simply said there are two ways of writing it. One is letter by letter by letter by letter, and they're all separate. So you just have to. That is not wrong. But in all the books that we see these days and by tradition, this is how we have come across. They are writing together. Because the question raised by Chitra Bhagini is really valid. Many people have. And it comes to this complex Samyukta Akshara, how to say it and how to write it. So anyway, thank you very much. Thank you. Thank you. Vanamala.
Namaskaram. Namaskaram. I have a doubt regarding this Anuswara. Yes. நான் வந்து third classல இருந்து தான் ஜாயின் பண்ணேன். So முதல்ல you might have mentioned it. இப்போ if you can go to ஸ்லோகா 6 of தசகம் 5. இப்போ நம்ம 7ல இருக்கோம். 6ல போனா அதுல வந்து இல்ல இதுல இல்ல. I think in any ஸ்லோகம் for example சில இடத்துல வந்து it is a dot above the letter and சில இடத்துல it is வந்து mark கீழே அந்த line. What is the difference between the two? Mark kira line, the halanta with ma will come only at the end of the sentence. It will not come in the middle of the sentence. Okay. That's all. That is all is the main rule. That is at the end of the part. If at all it comes in the middle of the sentence, it will be followed by a swarakshara. That is a vowel. It will not be followed by a consonant. Or a So if it is followed by a vowel, it will be a line under ma, the Anuswara. Correct. Okay. That will not happen in this text. That will not happen. It will come only at the end of the line. Because if at all it comes in the middle of the line, we will put that swara and ma together and make it together. For example, here Trividhatam Asadhya is there in shloka number 6, first line. Okay. So I could write it as Trividhatam with makara halanta and then write asadhya. Okay. But that Otherwise will it will be combined. Trividhatam asadhya. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Namaskaram. Vidya Lakshmi R. Yes, sir. Yes, you had a question. Actually, I got the answer just about the test only, sir. Mock test. Okay. Will they ask in between the dashakam or just to get the clarification? Yeah. On the whole, if I am recitating dashakam 5 means on the whole I have to recitate, right? No, we will ask you in between. Because if everyone recites all the 5 dashakams, 50 shlokas will take more than 20-30 minutes. So we will ask in between to see how much you have memorized and how well you are able to pronounce. The timing, sir? That we will tell later. Once everybody is registered, then we put a schedule and we will send you mails. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Sharada PCMC. Sharada PCMC, you're self-muted. Swati 27 Krishna. Okay, Sharada PCMC. Ram. லாஸ்ட் கிளாஸா தான் ஜாயின் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். இந்த நகாரம் சொல்றப்ப வந்து எண்டுலயும் இம் வந்தா நகாரமா இது பண்றீங்களா? எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் எனக்கு பேசிக் சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் இல்ல. உதாரணமா இன்னைக்கு உள்ள இதுல 9th ஸ்லோகத்துல நானாவித சுக்திர்னுத அது கடைசி அக்ஷரமா மாத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. அது முதல் கிளாஸ்ல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். நீங்க யூடியூப்ல போய் முதல் கிளாஸோட வீடியோ பார்த்தேன்னா நீட்டா புரிஞ்சுடும். நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. அதுல வந்து எனக்கு சின்ன டவுட் எப்படின்னா இன்பிட்வீன் வர்றதான் நகாரமா மாத்தணுமா இல்லாட்டா அது இன்பிட்வீன் உள்ளதெல்லாம் மாத்திக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்குது. எண்டுல அதாவது யாவிசன்னு சொன்னீங்க எல்லாமே நகாரமா மாறாது. அடுத்த அக்ஷரம் என்ன இருக்கோ அந்த அக்ஷரத்தோட கடைசி அந்த வர்க்கத்துல இருக்க கடைசி அக்ஷரமா மாறும். அந்த ரூலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அதை கேளுங்க, அந்த யூடியூப் வீடியோல போனா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். Swati 27 Krishna. நமஸ்காரம் சார். நமஸ்காரம். இப்போ எனக்கு 2 டவுட் சார். ஒண்ணு வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கடைசி ஸ்லோகம் கிட்ட வர இடத்துல பாதி ஹக்காரமும் வக்காரமும் வந்தது இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம வன்ஹீன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம்னா வேற மாதிரி பண்றோம். இது வந்து
அது only நகாரத்துக்கும் மகாரத்துக்கும். Only for nakara and makara, hakara will be pronounced after them. For all other letters எப்படி எழுதியிருக்கோ அப்படிதான். விராடா ஹ்வயம் தான். Hakara first and then makara. The exception is only for nakara and makara. Vanhihi, brahma, brahmanaha. Okay sir, thank you. And another thing is நீங்க இப்போ ஆத்ல வந்து பாராயணம் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த வீடியோ எங்க சார்? I'm not able to. Vyoma YouTube channelலயே இருக்கு. 4 பார்ட்டா இருக்கு. It's in 4 parts. Okay. It is not the old edited video இல்லையா? It is not edited. It is proper live video. It has just come up like that. So everything, whatever happened live, everything you will be able to see. Okay, okay sir. And one more thing is, இப்போ if அந்த ஏஜ் லிமிட்க்கு மேல இருக்கிறவா above 30 கூட we can try, right? அத நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு முடியலனா we can always choose that 20. Yes, everybody can do. I will be more than happy if everybody tries. Okay. I just said it is easier for people below 40. That's if somebody who is 70 or 80 tries, we will be the most happiest. Oh, thank you. And we are so blessed to have, we are so blessed to have such a good teacher, sir. You're doing a great job. Thank you so much. Guru Ayappan Grace. That's Ram. Shubha 1167. Shubha 1167. Ram Ram. Ram Ram. ரெண்டு திங், இந்த பாராயணம் பத்தி எனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்குல, எனக்கு அதனால எனக்கு தெரியாது. எனக்கு சரி, 2 நாள் பாராயணம் யாரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோ எல்லாருக்கும் மெயில் வந்திருக்கும். அது எங்க அப்டேட்ஸ் எங்க ஸ்பாமுக்கு போயிடுச்சு தெரியல. ஓகே, அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, எனக்கு இந்த புக் வாங்குறது எங்க வாங்குறதுனே தெரியல. எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி புக் அட் ஆல். புக் இப்போதைக்கு நீங்க பிடிஎஃப் வந்து கோர்ஸ் பேஜ்ல நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். அத நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ஸ்டில் இப்போ நீங்க டெஸ்ட் குடுக்கறேன்னாக்கா நான் படிக்கணும்னாக்கா அது 25 தசகம்க்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. இருந்தாலும் புக்கை வச்சுட்டு படிக்கணும். ஒண்ணு இந்த லாக்டவுன்ல எப்படி இருக்கோ தெரியாது. அதர் திங் ஆன்லைன்ல புத்தகம் கிடைச்சா கிரி ட்ரேடர்ஸ்லயோ இல்ல கிரி ட்ரேடர்ஸ்ல எஸ்என் சாஸ்திரி they used to sell தெரியும். if I don't know if they sell. Okay. Okay, thank you. Ram Ram. Jayalakshmi Shekhar. Jayalakshmi Shekhar. And then Devika Ravi. Devika. Ram Ram. Ram Ram. Ram Ram, sir. Your pronunciation is very nice, and I have improved in what I say in my daily shlokas. I have learned, especially when reciting Lalita Sahasranamam, especially where you have to use the Moolang and the Refa, the Ik, the Jikwa Mulya, all that I have personally improved. That is one thing which I have felt. And the second thing regarding this S.N. Shastri book, I inquired in Giri Traders. Right now, it is not available with them. The Chinmaya Mission book. I went 15 days back. I went to Giri Traders to find out whether the book is available. Right now, it is not available. You can get it only in Chinmaya Mission. That is what they told. So this is in answer to the other person who wanted that book. Thank you very much, sir. The documents I am uploading has the same this thing. So if at all you're not able to get the book, print the documents and you can make a file and keep it. You can stitch it yourself. That's the best thing. Okay, sir. Geeta Vinod. Namo Namaha Mahoday. Namo Namaha. Third shloka of the 5th Dashakam. எனக்கு நீங்க சொல்றத I heard it as Vigatam Viksham. That was in the last class I had recited like that. Today I made the correction. Adan rendu part, there are 2 different pathas. So we will stick to Vigatam. Yeah, it is. We are not going to follow that. We are going to keep it as Vigata Viksham. Vigata only. அப்போ தவுன்னு வருமா? விகதோ வீக்ஷாம்னு வருமா? தா வீக்ஷாம்னு இல்ல அது சமஸ்த பதம். அது விகதா கால விகதா
விகதானே வெச்சுக்கலாம். ஓகே. ஆமா விகதாதா விகதாதா. ஓகே. Thank you Mahoday. श्याम सुब राम राम ராம் 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 சார் புக்ஸை பத்தி கேட்டேன் சில பேர். நான் இன்னைக்குதான் வந்து சின்மயா மிஷன்ல எஸ்என் சாஸ்திரி அவர் எழுதின டிரான்ஸ்லேஷனோட தானே அந்த புக் கிடைச்சது. சின்மயா மிஷன் வெப்சைட்லயே கிடைச்சது. ஸோ அதனால அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தா தான் சொல்லணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 2 நாள் இதுவும் செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ராதாகிருஷ்ணன் நாயர். Namo Namo Mahodaya. Your class were excellent classes. Excellent classes. 2 questions, quick questions. One, where can I get the YouTube links? Your former classes, 4 classes. So one, if you already have the course page, if you go to the course page and scroll down, next to the stick itself, there is a play button. If you click that, you go straight to that page on YouTube. Each Dashakam, when all the live classes and along with the record, the other Dashakam videos, you can straight away get them. And you can, on YouTube, you can subscribe to Vyoma Samskrita Pathashala. Even in the slide below, you can see, okay, slide it is not there, but yeah. Vyoma Samskrita Pathashala is the name of the YouTube channel. You can find out that way also. Yes, sir. Thank you. The next question is, your printed notes, you said that you will be putting that in the website itself? That also is there on the course page. First link itself is the printed notes in 5 different languages. English, Devanagari, Malayalam, Telugu and Kannada. Oh, you mean by 4th page means? 4th page of the website? Yeah, course page of the website means wherever you registered for this webinar. The Sanskrit from home.in. Oh, yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is given. The website is given here on the slide itself on the left down bottom. The same website on the course page. Thank you. Thank you very much. KR. That is the name KR. ராம்ராம் அப்படியே ராம். இந்த கோர்ஸுக்கு எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது இந்த டெஸ்ட்டுக்கு? அதான் இந்த சாட்ல ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கா, இல்லனா அப்புறம் மெயில்லயும் ஒரு லிங்க் வரும், ஒரு ஃபார்ம். அந்த லிங்க் அனுப்பினா அதுல உங்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்றதுக்கு இது இருக்கும். சரி, நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு கிளாஸ். ரொம்ப நமஸ்காரம். கணபதி ராமநாதன். நமஸ்காரம். ராம் ராம். ராம் ராம். ஒரு கமெண்ட், இந்த உங்களோட அந்த கம்ப்ளீட் பாராயணம் எனக்கு அங்கங்கதான் கிடைச்சது. பட் மோர் தேன் த பாராயணம் ஐ லேர்ன்ட் it was a lesson for me in devotion with humility. Just seeing that was an experience that I will never forget. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Padmajanantayar. Namaskaram. Ram Ram. Namaskaram. Ram Ram. I will speak in English. We attended the 2 days Narayaniyam Parayanam from our home. Okay. And we are from Mumbai, so we are in a complete lockdown situation. Okay. But the 2 days of Narayaniyam Parayanam was a wonderful experience because it was as if the celebration was happening in our home. So we also installed the altar of Lord Guruvayurappan. We also prepared all the prasadams and did the Nevedyams as you were doing there. And it was as if it was an extended family for all of us. Oh, that is great. Thanks a lot for this wonderful offering and opportunity for us to be in the path of devotion. It's a pleasure to hear. Thank you very much. Thank you. Ram Ram. Ram. I think we are done for the day. We have had the longest session today for almost 2 hours. Ram 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 Sarvebhyah. Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Shubhamaste.